Mumbai ground, Victor Tango, Charlie Hotel, November on 123.45. Readability check 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Mumbai ground, Victor Students, Tango, please do Charlie calls Hotel. between yourselves. Victor Tango, Kilo, India, Golf. Victor Tango, Charlie, Hotel, November. Readability check on 1, 2, 3.45. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Peter Tango, Charlie, Hotel November, Peter Tango, Kilo, India, call, speak slower, say again, all. Victor Tango, Kilo, India, Golf. Victor Tango, Charlie, Hotel, November. I say again, readability check on 1, 2, 3.45. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. How do you read? Radio 5, how do you read? Victor Tango, Kilo, India, call. Radio 5, Strength 5, Victor Tango, Charlie Hotel, November. Raja, Victor Tango, Kilo, India, call. Very warm welcome, students. It could be a little more better the way it sounds, Chan, but good effort to be proactive and take the call. Didn't sound too energetic. I don't know why Kingshuk said speak slower. Maybe he was not ready for you to make a call to him. I think you were slow. Uh, but a little bit of more polishing would be good. Like, it should sound exciting. Anybody who's listening should be like, अरे ये क्या कर रहे हैं? I should also be able to do this. अरे ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे भी करना है. This is how it should be like. Like if anyone hears you speak, they should be like, अरे कहाँ से सीखा आपने ऐसा आर्ट इतनी जल्दी? It'll be like पढ़ के सीखा है. हो गया. Wasn't easy, wasn't tough. It only took time. That's how you should say. Like proper learning. Good job, students. Not that great. I mean, आपस में कॉल करने हैं, इंटरेस्टिंग कॉल्स करने हैं, सिर्फ रीडेबिलिटी चेक क्यों कर रहे हो? वो तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा. So that is still missing. Are we ready? Do we have any questions? I think we are ready to start directly. Nakul, very warm welcome. Kingshuk, very warm welcome. We have Sayan joining us today. Sayan, it's good to see you take effort to join the class. Uh, I think Ujjwal is also here, Chen and Kunal. So Meet won't be joining us, and I don't think Anne is available. Okay. Can all stations do a call and check readability? Or is it just Nukul and not Nukul, sorry. Is it just Chen and Kingshuk? So Nukul, Sayan, Kunal, and Ujjwal. I'm meaning to tell you all if you all could do a check so that we know you can hear and Radio 5, Victor Tango, Kilo Romeo Foxtrot. How do you read? किसको पूछ रहे हैं आप? किसने ये कॉल लिया आपके साथ? ना सिर है ना पूछ है. कहाँ का कॉल है ये? Sir, actually, I was asking you. Is this a way to ask the other station how do you read? मैंने तो पूछा ही नहीं. तो आप रिप्लाई कैसे कर रहे हो? Stan is not doing, Ujjwal is not doing, Nukul is not doing.
नुकुल, ठीक है, आप नहीं करो चलेगा, आपका वीडियो ऑन है। आप सुन पा रहे हो कि नहीं? विक्रांगो नवंबर किलो चार्ली। नवंबर किलो चार। या फाइन, मत करो, नो वरीज, मत करो। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, हाँ हाँ, Victor Kilo India Golf. So, are we allowed to take pens inside the examination hall, or will they be provided in we the need to institute? carry our own stationery. Okay, so and we can we take like sketch pens so we can mark the route? No, no. Everybody uses the same pen to mark the route. You will see some charts will be marked a lot Okay, sometimes. So you don't okay, do that. You can carry a pencil for the charts and a okay, pen for the logs and maybe a scale. That's it. okay. Carry an So, extra pen. okay, so will they be like pages, like individual pages? They'll give you like an answer sheet with a question paper. Answer sheet will be like maybe stapled somehow. Like we'll check with one of our students. They'll tell us what they saw the last time, and you can just expect the same thing. Okay. I think Sabrish was not invited. I'm so sorry. Okay, so I don't have any response from Nukul, Sayan, and Ujjwal, but I'm not going to like worry about that because let's focus on Victor Tango Charlie Hotel November doing a very good live exam. Okay. Roger, sir. Hmm. I would suggest students to keep the videos on, but at your comfort, I don't mind. Will it simulate a blind experience? So I'll go blind. You imagine the examiner is behind you, and imagine that you're connected with an what do we say? Mm, what is that? Headsets, wired headsets. No PDT there, just like now. Okay. Roger, sir. Hmm. अरे उज्जवल, नाइस टू सी यू, एंड कुणाल, नाइस टू सी यू। आप तो नहीं कर सकते थे वीडियो, बट नाइस टू सी यू, यू आर डूइंग इट। अच्छा लग रहा है। उज्जवल, कैन यू स्माइल? है सर। नाइस नाइस। बहुत देर से तो ऑडियो ही नहीं आ रही थी, बहुत देर से तुमको कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। अभी आ रही है ना ऑडियो? जस्ट ऑडियो आनी स्टार्ट हुई। आई थॉट सो, आई थॉट नुकुल को भी नहीं जा रहा था ऑडियो। आई होप एवरीबडी कैन हियर मी वेल स्टूडेंट्स, है ना? इफ Affirm, नॉट, sir. मैं विंडो के पास हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, देखते हैं कहाँ तक पहुंचता है मेरा रेडियो फ्रीक्वेंसी आपके पास। आई थिंक अप टू द नेक्स्ट वट एवर वी कॉल इट, नेक्स्ट टॉप तो चला ही जाएगा आवाज। नो, इट्स नॉट पॉसिबल अनलेस वी आर हल्क, आई डाउट। Okay, let's get started. Everybody take a screenshot of the question paper. You will determine your solutions also. At the same time, you'll observe the calls made, responses given, both at the same time. Do not interrupt. Everybody will be on mute other than Victor Tango Charlie Hotel November. And once the paper is done, quickly, in a very energetic way, in a very happy way, we are going to discuss the paper and quickly assess and get done with the exercise. Please, please show me the energy. Okay, I request. ऐसे खुद से आए हो तुम लोग, ये आपका खुद का ड्रीम है, भूलना नहीं है। Nobody should be forcing you to do the right thing. I hope everybody can see the paper. Take Affirm, a sir. screenshot. All the best. You can start. Yeah, you can start transmitting.
Question 1 Alpha. Bhopal Tower, Air India 9er 32 122.5. Stand 2. Airbus 321. Persons on board 100. Flight level 330. IFR Bhopal to Nagpur. VFR Nagpur to Visakhapatnam. Time 0645. Security check cleared. Information Charlie. VIP on board. Request startup on priority. Air India 932, Bhopal Tower. Standby for startup. Confirm if obtained ATC information. Bhopal Tower, Air India 9er 32. Obtained ATC information. Standing by for startup. Roger, Bhopal Tower. Bhopal Tower, Air India 9er 32. Time 0655. VIP on board on stand 2. Request startup on priority. Go to next question. Question 1 Bravo. Bhopal
Tower, Air India Niner 32 122.5 on taxiway Charlie. Request taxi instructions. Air India 932, Bhopal Tower. Taxi via Charlie 1, Lima 2, turn right for taxiway Lima 4, hold short, runway 32. Report reaching. Kindly expedite. Bhopal Tower, Air India Niner 32. Taxi via Charlie 1, Lima 2. Turn right for taxiway Lima 4. Hold short, runway 32. Wilco. Roger, Bhopal Tower. Work on your replies. You can use a better format. Bhopal Tower, Air India Niner 32. Turning right for taxiway Lima 4. Approaching, hold short, position, runway 32. Where did Charlie 1 and Lima 2 go? Go to next So question. question 2. Bhopal Tower, Air India Niner 32. 122.5. Holding short, runway 32. See traffic on base lake. Holding position, VIP on board. Request instructions. Air India 932, Bhopal Tower. Roger. Report intention. Bhopal Tower,
Air India Niner 32 would like to enter runway 32 for lineup VIP on board holding position. Go to next question. Ask you to work on your replies. A reply should start with read back. Well, sir. Question 3 Alpha. Nagpur Control Air India 932. Nagpur Control Air India 932 disregard. Pan 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 Pan. Nagpur Control Air India 932 experiencing transponder failure 55 DME inbound Nagpur. Whiskey 38 radial 333 flight level 8 correction flight level 140 request descent to flight level 110 aircraft VIP on board
Airbus 321. Go to next question. Question 3 Bravo. Nagpur Control. Air India 932. Position overhead Nagpur. Airbus 321. Whiskey 38. Radial 333. At 0730. Experience transponder failure. Flight level 140. VIP on board. Airbus 321. Request descend to flight level 110. Go to next question. Quickly do. Next question. So the question 4, the Mumbai Delhi boundary is on a different route, Mm-hmm. but I am on the opposite side. So here I have to go through the Mumbai Chennai FIR, Hmm. but it's given Mumbai Delhi FIR. So take it as Mumbai Chennai. Question 4, Mumbai radio, copy Chennai radio, raised, correction, Chennai radio, overhead, Mumbai, Chennai, FIR, boundary, revised ETA,
0745. Estimating Vishakhapatnam 0755. Airbus 321. Persons on board 100. VIP on board IFR Bhopal to Nagpur, VFR Nagpur to Vishakhapatnam, changing over to Chennai radio. Go to the next question. Quickly solve all 5 questions. You don't have much time. Victor Tango Papa Oscar Sierra, wind shear warning at middle marker, runway 19er. Continue answering all one by one. Question 5, part 2. Don't mention question number, just answer quick. Control terminal Next. Mayday, Mayday, Mayday. Wrong. Next. Climb to flight level 360. Next. Landing weight should not be more than pavement classification number. Okay. Time's up. Submit your logs. And everyone else, please pay attention. Sayan, Kunal, Nukul, Kingshuk, and Ujjwal. I am adding y'all to another room and I want y'all to discuss together, come to a common ground as to how is the paper and how much you would assess. I'll be a part of that discussion, but I'll just be listening. So just let's do that. I'm giving you 3 minutes to do that. Discuss points between each other, talk to each other, use your call signs, and see how much to give. Let's see how it goes. Don't delay. Chen, you send your logs properly and just think and feel about your paper till the time I get back to you. Roger, sir. All station, Victor Tango, November, Kilo Charlie. The paper was, I'm able to figure out all the questions, and paper was for me. It's quite simple, and I'm understand all the questions. I think Victor Tango Charlie Hotel November. I think is not able to figure out the question number second. It was a urgency call because we are in a base leg. Sorry, we are in a holding shot, and the glider is in the base leg, so it is a urgency call. And question number fourth. Sorry, cannot see the question paper here, but transponder failure is a non-RVSM. We are in the non-RVSM flight level, so we have to descend at flight level 290 below, or climb flight level 410 above 410. And the last question was the, I guess, FIR report. So yeah, I think Victor Tango Charlie Hotel November, I think you need to figure out which
identification of question, you need to improve your Victor Tango, November Kilo Charlie. Victor Tango Charlie Hotel November. Do you think in question 3 alpha it would have been like an unable RVSM call? Yes, it was a transponder failure. So due to equipment, you need to uh, climb or descend a non-RVSM flight level. And And second question was, uh, if you are connect with the ATC, then you are in Nagpur, so you have to cancel your IFR flight, connect to VFR flight, and you need to descend flight level 120, I guess, in whichever whatever is given in question paper. At that flight level, you have to descend, and you have to mention non-RVSM because you're still transponder failure. Roger, Victor Tango Charlie Hotel November. And also in question 3 alpha, I think it was also an RCF call, right? Can you read the question for me? Yeah, sure. Yeah, yes, it's a urgency call and pen. No. If it is if there is a non-RCF, then it will be the urgency because it is not given RCF over there. But Only again, the follow-up question 3 Bravo, it's given ATC contact is re-established. Then I got confused. Maybe it was an RCF call. Okay, then it will be RCF failure along with that. So then it will be urgency call. Roger, Victor Tango Charlie Hotel November. Do you have any more inputs, Victor Tango Charlie Hotel November? No, I think you have to increase your rate of speech little bit so you can complete your paper on time. And yeah, everything is fine then. Roger, Victor Tango Charlie. You not carry out the compliance, taxi compliance properly. Can you say some mistakes? Like what did I do? Victor Tango You Charlie know, Hotel November. the taxi instruction given by the ATC, you have to follow with the one by one. If where it is, okay. So you have missed that some points. Miss that instructions. Like you have Taxi to via start. Charlie 1 Lima 2. Yeah, you have to start from Lima 2, then Lima 4. Sorry. Yeah, Lima 4. Sorry, Lima 2, then Lima 4, Then turn and right for then Lima 4. yeah, turn right for Lima 4, then holding short runway. So I think just I skipped one compliance, then I shifted to the next one. yeah. So maybe it could have been just like Bhopal Tower, Air India 9832, taxiing via Charlie 1 Lima 2, will turn right for taxi by Lima 4, and then later on, one by one. Yeah, yes. Okay, You skip understood. one. Roger, Victor Tango Charlie Hotel. Thank you for the inputs. Victor Tango November Kilo Charlie, Victor Tango Charlie Hotel November. Do you know what will be the answer of question 5 part 2? Question 5 2. Yes.
What was sorry, I don't have the question. Actually, the question, the 5 was transmit as per RT, and question 5 to it was given Charlie Tango Alpha Mike. Oh, that was distresswa. And that was question Distress. 5, part 3. It's a distress. Okay. So it's just basically, Abbreviation is distress. and alpha is alert and all those things. Sorry. Alpha is alert and all those things. Sorry, Distress I by didn't- alpha. Yeah, distress for abbreviation of distress. Roger. And what will be the transmission of Charlie Tango Alpha Mike? Question 5, part 2. Uh, Charlie. Tango Sorry. Alpha Mike. What was given there? You just have to transmit as per RT. Sorry, I don't have question. Let me Okay. check. Question paper. Can you see the question paper maybe? Okay, no, I have to just, I think I have to. Yeah, can you see the question paper? Yeah, Victor Tango, Papa Oscar, Sierra, windshield warning at, okay, climb to, I think the only wrong answer would be, I think third one. You have given wrong answer, third one. So What it's about- distress fa, that. So abbreviation of distress fa is distress. What about the second one? I don't know about the second one. It was new for me, I think. I didn't recall the question 5 right now, so I'm not sure about it. It's all right. We can check it now. Victor Tango November Kilo Charlie Victor Tango Charlie Hotel number. Are you appearing for the Kolkata attempt? Yes. I was Okay. ready for the call. You're from Kolkata only? No, I'm from Maharashtra, Gondia district. Nice. And I saw you initially in those first lectures. I started Golf 22 batch. Yeah. Long time. Yeah. I've been since 2 years, 2.5 years, contact with. I'm sorry to interrupt, but I think you're having some lagging issues, like video and voice. Victor Tango Charlie November. Victor Tango November Kilo Charlie. How do you read? Victor Tango November Kilo Charlie, Victor Tango Charlie till November. Radio 5, but the video is a bit lagging. Radio. In question 4, you can mention the
whatever report will you give the Radio state? 2, Victor Tango Charlie Hotel November. Okay. Victor Tango Charlie Hotel November, Victor Tango November Kilo Charlie. How do you read? Victor Tango November Kilo Charlie, Victor Tango Charlie Hotel November, Radio 5. How do you read? Radio 5, Victor Tango November Kilo Charlie. So in question number 4, FIR report, you need to mention the report type. If there is here is FIR report, so you need to mention FIR report, then go with your call. Okay. Every report you need to mention. If there is a position report, so you have to mention the position report, then go with your call. Air prox report, air report, and this is FIR report. There is a wind shear report also. If there is a wind shear, then you need to mention the wind shear report and go with the rest of the call. Roger, So Victor Tango Charlie Hotel November. here you missed that FIR report. Affirm, I did. And you can mention your time, estimates you have mentioned, but you are not other information you have not mentioned, like radial flight levels, waypoint. No, okay, waypoint also there, rebro, like, and estimates. So this will be the, I think if you mention these parameters, then it will, so that will be your complete call, proper call. Roger, Victor Tango Charlie Hotel November. I think I just I lost my confidence in question 3. I think I did some bad decisions, and then after that, question 4, I know it was easy to make, but then I lost the confidence before coming to question 4. That's the reason. Okay. So Victor Tango November Kilo Charlie, Victor Tango Charlie Hotel November. Do you think like question 3 alpha would have been just like since it's a RCF and I am deviating on my own and I'm having unable RVSM, it would be a pan call, and Actually, also like all aircrafts, I right? have not, okay. I have not seen their RCF. So, for my opinion, it will be you need to climb above 41 or descend below 290. If there is an RCF, then you have to deviate on own. But I have not seen over there RCF with RCF. But the follow-up question like mentions gives you a hint that it was a RCF, the previous call. Like ATC is back on contact, something. Okay, then we have to deviate. And then it would be like an all aircraft in the vicinity of, I think, Nagpur. Yes. No, it will start with urgency. So pan. All aircraft. And you follow your call, rest of the call. Roger. Would you like to give me some tips based on your previous attempts, like anything that I can work on, and that will really help me? Victor Tango Charlie Hotel November. You practice more. The only thing is you will help that practice whatever the days will remain with you. So you daily practice and make a proper structure of the call, so you can remember the things you have to mention over there. So do practice
of these calls and read the questions properly, because in examination my experience is that if your attempt was wrong, and like if I assuming something else and I'm giving the calls, they will directly give zero. So you have to figure out what is the what is the question, and according with that you need to attempt it. Roger, The Victor last Tango. exam I was attempting. Okay, so last exam I was attempting in, I think, yeah, Mumbai. So there was a one waypoint which is over the FIR boundary. So I thought there will be a FIR report. So I have given the FIR report, but he gave me a zero. Then he called me, examiner called me. So he said that you need to just give the position where from where are you and where are you going, an estimate. That's it. So So वहां पे FIR report आपने चेक किया whether the paper had HF or not? अगर HF को कोई मेंशन नहीं है, हो सकता है कि ऐसा भी है कि वहां पे सिर्फ VHF हो, एंड दैट्स व्हाई. yes, sir. Sir, right. So over there, I am in VFR flight. Hmm. So he told me that you are Generally, VFR flights, small flights don't have HF. It only has VHF. So see, as per Rule 63 of the Indian Aircraft Rules 1937, we can fly commercially as per two rules, IFR and VFR. Okay. For both areas, an aircraft has to be, so the condition is that the aircraft should fly either as per VFR or VFR and follow conditions under IMC, VMC. And those aircraft should be fitted with a two-way radio telephony equipment on VHF as a compulsion. Okay. So as per IFR VMC, your personal licensing will take care of everything else, including your training, your medical fitness, and everything else. The only thing left to allow you to fly commercially in India would be to have the ability to operate that approved radio telephony two-way communication equipment, and that is proven by the RT license. So वहां पे इसलिए गलत मिला है बिकॉज वो क्वेश्चन में एफआईआर रिपोर्ट नहीं जाता, पोजीशन रिपोर्ट ही था. So this is a good point. Generally, if we have a waypoint on FIR boundaries, so we think it could be an FIR boundary report call also, not just a position report, because position report will come in the FIR boundary report or FIR report, but it will go on HF. So that's where this is a good point नुकुल आप शेयर कर रहे थे चैन के साथ. वही मैं सोचूं आप वो रूम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो. I'm sure कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा चैन को आपके एक्सपीरियंस से. So it's a good point. This way we can all decide that if we are on a waypoint, let's start with the VHF call and a VHF position report call, even if it coincides with FIR report. And see if they are not happy, then say, okay, sir, I'll do it on HF, and HF I'm doing, then it makes sense to do an FIR report also. What do you think? You can always share that with the examiner and fight for it. Like if they're talking so much to you, then you can also talk to them and see if you can work it out something else. So with this experience, be sure you don't have HF. If you have HF, then you have two options over waypoint. It could be a position report, it could be an FI report if the waypoint coincides. So if the mention is only of a waypoint, go with VHF position report. And if they have mentioned FIR boundaries or a strong hint is given to make an appropriate report, call on HF, call radio, something like that, then it will be an FIR report. Otherwise, 60% weightage should go to position report because Nukul has faced this, so we'll be aware about it. A VFR flight generally could only have VHF. IFR flight could also have VHF, but I think IFR flights might also have HF on board if they are carrying a lot of passengers and flying in a commercial area. If you're doing a general flight or a private flight, then probably an IFR with VHF could be allowed without any HF on board. Still, it depends upon the distance that you're going to fly. If you're just going to do a training flight or just going to fly a small sector,
then probably you might be approved to fly VFR with just VHF on board. Okay, because your aircraft might not have HF. So that way, that was the particular situation there. We'll pause on this. Chayan and Nukul, आप लोग बाद में please continue कर लेना. Roger, Okay. sir. Okay. So Chayan, how was your experience? So I messed up with question 3, so I just made really bad decisions. Question 3. Okay. So see, it's not your problem. Question 3, there was a error in the paper because experience RCF was not mentioned. Okay. Otherwise, it would have been an unable RVSM call where you are deviating on your own. उज्जवल आप डिस्कशन में एक चीज बोल रहे थे कि यू विल डिसेंड टू अ नॉन आरवीएसएम फ्लाइट लेवल ऑन योर ओन. दैट इज रॉन्ग. You will do an approved deviation on your own, not descend a deviation 15 nautical miles right or left and level change by 500 feet. That is what you're supposed to do as a perfect solution to this. Here, because RCF was not given, you were confused, you were thinking, मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ. I'm very happy to see that somehow you managed to go ahead with the call and give something because the question was not making sense is what I'll take out from this. Maybe you'll get a question that is not having any error, but you might not know what it means. Still, you're able to take a call and not a bad call. So I really like that. If it is with RCF, then what would we do? Transponder Mode Charlie Mode Sierra is one of the major equipments certifying our aircraft to be RVSM approved. I'll reiterate, किंगशुक आपको भी याद नहीं था, कुणाल आपको भी याद नहीं था, उज्जवल को याद था. You cannot forget something like this. Mode Charlie, Mode Sierra, transponder not working, altitude alerting device is not working, automatic altitude holding device is not working, altimeter redundancy should be there, as well as ECAS, TICAS should be working. Add that to the list of equipments. Airborne collision avoidance system, traffic collision avoidance system. नकुल ऐड कर लो. पांचों चीजें अगर नहीं चल रही हैं, पांचों में से एक, योर एयरक्राफ्ट बिकम्स अनेबल आरवीएसएम. नवंबर पापा तक आप आईएफआर जा रहे हो तो वहां तक आपको अनेबल आरवीएसएम लगेगा. डिविएट ऑन योर ओन ऑल एयरक्राफ्ट कॉल है, ये बहुत सिंपल है. कल सिमिलर पेपर हमने सॉल्व किया था. एंड क्वेश्चन 3 ब्रावो वुड बी कॉन्टैक्ट रीएस्टैब्लिश्ड, रिक्वेस्ट रीजॉइनिंग क्लियरेंस एंड डिसेंट तो मांगोगे ही नॉन आरवीएसएम फ्लाइट लेवल. बट बिकॉज यहाँ पे फ्लाइट रूल्स चेंज हो रहे हैं, सो जो उज्जवल बोल रहा था वही हम यहाँ करेंगे इन द डिस्कशन फॉर कुणाल एंड किंगशुक एंड सायन. कैंसिलिंग माई आईएफआर फॉर वीएफआर, रिक्वेस्ट रीजॉइनिंग एंड देन डिसेंट टू फ्लाइट लेवल 120. आप पता नहीं 140 कहाँ से सोच के बोल रहे थे. 120 है फ्लाइट लेवल. तो देखा जाए तो अगर वो एक चीज मेंशन होती सिर्फ एक्सपीरियंसिंग आरसीएफ, तो शायद आपको इतना कंफ्यूजन नहीं होता. आईटीसी से पूछ लेते सर. क्वेश्चन नंबर 3 ब्रावो इज लाइक talking about communications back, so I think it's not mentioned in 3 alpha. Should I be expecting RCF in question number 3 alpha? अगर आपको क्लिक हो रहा है तो आप पूछ सकते हो वहां पे. Roger, sir. Question number 4 is a very simple FIR boundary report. That is an FIR report. You didn't mention the name of the report, didn't mention call sign, didn't follow the structure. कोई बात नहीं. I'll analyze. Question number 2, students from the discussion room. इन दी एंड आप लोग ने बहुत देर तक इस पे डिस्कस किया. शुरू में आपको लग रहा था ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा. इन दी एंड somebody said the right thing, which is VIP on board you will be able to depart before it lands. तो आप Yes, परमिशन sir. मांग सकते हो. Yes. बट शुरू में आप लोग का इंटेंट सही नहीं था वहां पे. ठीक है. सो Okay. मुझे आप लोग का कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, बट आप लोग की एक्यूरेसी 80% थी डिस्कशन रूम में, विच इज नॉट बैड, विच इज नॉट बैड एट ऑल. आई एम होपिंग विद इन कपल ऑफ डेज 100% पे आ जाएगी वो. So that is good. I love the confidence and everything. Good job there. अच्छा था वो, as expected. Coming back to Chayan's performance. Chayan, how was your experience? Continue sharing. So, no, Victor Tango November Kilo Charlie like figured me out a lot of mistakes. And question 3, the Bravo, I think if I would have read question 3 Bravo, then I think I would have been able to figure out that question 3 Alpha was indicating towards an RCF call, but just didn't scan it before question attempting question 3 Alpha. I think that was a mistake there. And
In question 4, I think I just forgot to give the call sign and also the report name. So, and question 5, part 2, I think I knew the half of the abbreviation, but I think I couldn't recall at that time. See, question number 5.3 is distress phase. So you give the answer for such questions first from the abbreviation because they're asking you to transmit an RT. They're not asking for definition. If they would have asked for definition, then distress for you would have given a definition for what kind of situation it is. You started with Mayday, which was not correct for both options. First say distress phase and then start giving definition if you feel like. Question number 2 is a very important abbreviation. Get used to it. It's climb to and maintain. ATCs will ask you if you are given a climb instruction, what does it mean? You will say, sir, if I are given a climb instruction, it means climb and maintain. I say again, examiners will ask you, what does it mean if you are given a climb instruction? You will say that, sir, it means climb to and maintain. If I tell So, you Victor Tango November Kilo Charlie, stand by. If I tell you Victor Tango November Kilo Charlie, climb flight level 350, then it means he will climb and maintain 350. Somebody asking something? yes, Victor Tau Kulinda Golf. So if the examiner says climb to and maintain flight level 100, so we can write the abbreviation form CTAM. We will write all approved abbreviations. Okay, so Please get used to it. Check if you are missing abbreviations, study them, write them. Your time was up by the time you did question number 5.4. So question number 5.5 answers will not be marks will not be calculated in the total. Roger, sir. Okay, so students have given you otherwise 49 overall. They were giving you 53, but we will not take the question number 5 because they didn't know about the time also. So 49 is what you have got. And questions that you really didn't score much. You might think it's only question number 3, but no, it's also about the replies. So Chayan, let's focus. Everybody please take a copy of the question paper so that I can just share the screen. from Victor Tau Kulinda Golf. एग्जाम में रेड पेन मत ले जाना ब्लू नुकुल ब्लू ब्लैक दोनों चलेगा ना Affirm, sir. Blue and black. ब्लू ले जाओ Roger, sir. logs are fine logs are pretty good okay so question number 1 alpha okay it's a simple startup call you took your time and you mentioned priority VIP on board by yourself which was really good you So did I have a mention question, so can I ask? yeah wait so hold on to the question did say VFR and IFR. Just you can mention the word thereafter. IFR Mumbai to Nagpur, thereafter VFR to Visakhapatnam. So get used to the word thereafter. It's good. You can use it. When you're mentioning Roger, sir. time 0645, don't mention time 0645. This time 0645 right near your ear. As answered, as given in the question paper. Instruction 0645 right here and then transmit the call. Or you can say 0645. Okay. Security check cleared information Charlie. भोपाल में डियाटिस नहीं है और That's the question. एटिस भी नहीं है सो आप इंफॉर्मेशन चार्ली कहाँ से बोल रहे हो हम इसीलिए आपको पूछ रहे थे कि कंफर्म ऑब्टेन्ड एटीसी इन्फो places that don't have diatis or atis the information that we get on diatis or atis is obtained in the name of ATC information simple Roger, sir. so you should have ideally rephrased it like this ATC information obtained or affirm ATC information obtained like this. One major thing that I want you to understand is when you start replying, your replies should start with a readback, okay, acknowledgement, then any reply to a question asked, and then ending with your call sign. Roger, sir.
तो वो आपने यहाँ पे गलत किया है, और आपको एटीसी ने हिंट भी दिया है, फिर भी आपने वो फॉलो नहीं किया है। बट 2-3 बार एटीसी ने जैसे ही आपसे बातें करी, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक हो रहा था, ऐसे लग रहा था कि तुम थोड़ा स्ट्रेस ले रहे हो। डू नॉट लेट एनीथिंग दे से मेक यू फील नेगेटिव, try to take something positive out of it. Okay, students. Roger, sir. But you did well. A lot of areas you have worked upon with respect to your rate of speech. It was really good. बीच बीच में जहाँ दिक्कत आ रही थी वहाँ बीच बीच में rate of speech पुरानी वाली हो रही थी, but you took care of it. It was really nice. बीच बीच में नाग भोपाल टावर, एयर इंडिया 9032 अलग अलग एंटिटी लग रही थी, बट वो ज्यादा नहीं हुआ है। सो इट शोज मी दैट यू आर वर्किंग ऑन इट, एंड दैट्स अ रियली गुड थिंग। बहुत अच्छा है। आई थिंक 1-2 दिन में बहुत अच्छे से पॉलिश हो जाना चाहिए। सो हियर रिप्लाई वुड बी हाउ, हियर you'll say standing by for startup, affirm ATC information obtained. So 1, 2, and then this 3. Air India 9032. Your replies need to be like this. Only compliances will start with W1, W2 because there is a time spent between doing the compliance. Otherwise, this is a consecutive call. Roger, sir. Hmm. A good thing that after said Roger, nothing else, you call back the ATC to say I'm standing by for startup. Here, how do you say? So if ATC has asked you to stand by and they have not gotten back to you and you want to go quickly, cannot wait for a long time. So what do? You take a call like this. Everybody observe, this is something that will keep happening in real life also. So you'll say Bhopal Tower, Air India 9032, standing by for startup, estimated time of departure 0645, VIP on board, kindly expedite. This to get extra points, a very simple reply to such a call is actually like this. Bhopal Tower, Air India 9032, standing by. That's it. Okay. So Roger, sir. somewhere Chan was doing the right thing. He did mention that 10 minute हो गया है, मेरे को delay हो रहा है. So that's what his intent was. Please time बोल के time मत बोलो आप. Okay. यहाँ सुनने में सही नहीं लग रहा है. And ये बाकी सही था. VIP on board, stand to, request startup on priority. Only thing you missed was that you're still standing by an instruction given to them. So here you had to mention that standing by, and then you could have mentioned VIP on board, time 0655, stand to, request startup on priority. You could do that. Just mention that you're still standing by, students. It happens a lot. Okay? Are we Roger, clear, sir. everyone? Yes, sir. Of So I course, had sir. one question. Uh-huh. So अगर हम बोलते हैं वीआईपी ऑन बोर्ड और फिर भी उनको डीले दे रहे हैं, तो विल वी से वीआईपी ऑन बोर्ड रिक्वेस्ट स्टार्टअप ऑन प्रायोरिटी फिर से कि वी विल एक्सेप्ट द स्टैंड बाय? Yeah, a pilot would do that, ना? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में उनको समझाना है कि यार क्यों नहीं दे रहे हो, 10 मिनट हो गया है, 5 मिनट हो गया है, आपके पास वीआईपी नहीं है, फिर भी ये इश्यू है, आपको तो फाइट करना होगा, पूछना होगा, लाइक इट्स नॉट अ फाइट, बट एटीसी एनवायरनमेंट ओपन है, लाइक एटीसी चैनल्स ओपन है, आप फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड हो, कुछ हो नहीं रहा है, आपको बस स्टैंड बाय बोला है और वापस आए नहीं आपके पास। सो इट्स योर जॉब दैट विद इन 5 to 7 minutes, अगर स्टैंड बाय से वापस वो लोग नहीं बुला रहे हैं आपको, इट्स योर जॉब टू चेक विद देम, इट्स योर ड्यूटी टू चेक विद देम। मुंबई टावर, करेक्शन, मुंबई ग्राउंड, एयर इंडिया 9032, standing by, just give them a gentle reminder. So they will just, if they are on it, if they have not missed it, then they'll say India 9032, Mumbai ground, correction, whatever, Bhopal tower, stand by. So you'll say standing by, India 9032. Simple. उसके बाद थोड़ा और डिले हो रहा है तो वापस कॉल करो, भोपाल टावर इंडिया 9032, जस्ट रेज द स्टेशन, और भोपाल टावर इंडिया 9032, स्टैंडिंग बाय, वीआईपी ऑन बोर्ड, नीड एक्सपेडिशियस हैंडलिंग.
ऐसे भी बोल सकते हो आप। ओके। हम्म See, students, it's all about communication. It's not an exam where you have a question and you'll have one fixed right answer. You will have one fixed basic elements in a right answer, but the right answer could vary from how a pilot chooses to construct. Three different pilots will have three same correct calls, but with certain variations in all three of them. This is how RT exams are. So feel free and relaxed. Just focus on accuracy and correctness. Think, and then give calls. सो उस हिसाब से तो सिली मिस्टेक्स बहुत कम की है। रिप्लाईज वाला एक सिली मिस्टेक था, और बाकी डेड एयर एंड ऑल वाज नॉट अ बिग इशू। करेक्शन एक दो बार सही बोला, एक दो बार नहीं बोला, आई थिंक यू विल पिक इट अप। यहाँ पे बाकी लोगों ने आपको 7 दिए हैं। आई थिंक 7 इज गुड। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रावो कंप्लायंस में आपको फ्रीक्वेंसी बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी कॉल अच्छा था, आपको दिया। आपने विल को बोला। विल को दो चीजों के लिए है, रिपोर्ट रीचिंग, काइंडली एक्सपेडाइट। सो आप बोलोगे विल रिपोर्ट रीचिंग, एक्सपेडाइटिंग, और विल को विल एक्सपेडाइट। दो है इंस्ट्रक्शंस, तो इसके लिए विल को बोल दो, और इधर बोल दो विल एक्सपेडाइट, और यू कैन से विल को अनेबल टू एक्सपेडाइट, ये भी बोल सकते हो। हर कोई फास्ट टैक्सी नहीं कर सकता, रैपिड टैक्सी बोलते हैं उसको। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड रैपिड टैक्सी। यहाँ पे भाई साहब आपने कंप्लायंस में सीधा लिमा 4 पे कैसे चले गए? एंड दूसरी चीज, रिप्लाई में अगेन W1 W2 नहीं आना चाहिए, रिप्लाई शुड स्टार्ट फ्रॉम ईयर 1, एंड देन दिस कॉल साइन शुड कम हियर, इंडिया 932। चैन आप समझ गए हो ये चीज? अफर्म सर। बस इतना करते ना, आपके आई थिंक 8 से 10 मार्क्स बढ़ जाते। तो पासिंग मार्क्स तो ले ही आते आप, बस एक छोटी सी चीज नहीं बोलते तो आप। दिस वॉज द ओनली सिली एरर। और ये So, क्या sir, हुआ यहाँ पे? टैक्सी विद in चार्ली 1 एंड लिमा 2 क्यों स्किप किया? yes, sir, I missed the sequence, sir, like one by one in compliance. हाउ कैन यू मिस द ओनली थिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू डू? डोंट मिस सच थिंग्स प्लीज। What is this? Approaching hold short position runway 32? No. इधर runway holding point term है। Okay, approaching holding point runway 32, और approaching runway 32 will hold short runway 32। Approaching hold short position runway 32 गलत है। Approaching holding point runway 32 बोल दो, अगर आपको इसको अपने वर्ड्स में डालना है तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ थी। And don't worry if ATC says something, try to catch the hint and take it in a good way only. यहाँ के बाद आपका थोड़ा मेरे को ट्रांसमिशन थोड़ा वीक लगने लग गया था, बट नो प्रॉब्लम, आपने कवर कर लिया। सिंपल कॉल, एवरीबडी एल्स इज गिवन यू 5, रिप्लाई एंड मिस्ड, you'll get 6 बिकॉज कॉल्स काफी क्लीन थे, तो उस हिसाब से यू गेट पॉइंट देयर कंपेयर टू देम। मैं तो 7 भी देना चाह रहा हूँ, बट 6 इज फाइन। क्वेश्चन नंबर 2, इट्स अ सिंपल कॉल, 20 on 20 मिल सकता है। आप लोग को ध्यान देना है ऐसे कॉल्स पे, जितना सिंपल लगेगा उतना उस कॉल को आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देना होगा टू गेट मोर पॉइंट्स। तो आपके पास वीआईपी ऑन बोर्ड है। ग्लाइडर जब फाइनल्स पे होता है, वी डेफिनेटली डोंट एंटर द रनवे। ग्लाइडर बेस लेग पे है, आइडली यू शुड गिव वे टू ग्लाइडर, बट बिकॉज यू हैव वीआईपी ऑन बोर्ड, ऑलरेडी आप 10 मिनट लेट हो, तो यू शुड बी सेइंग विल बी एबल टू डिपार्ट बिफोर इट लैंड्स। खुद से गारंटी देनी चाहिए, ये वर्ड एज इट इज आपको यूज करना है। ये फ्रेज विल बी एबल टू डिपार्ट बिफोर इट लैंड्स, रिक्वेस्ट एंटर रनवे 32, ऐसा। अगर वो दे रहे हैं तो एंटर करो, क्विकली टेक ऑफ कर लो। वो नहीं दे रहे हो तो होल्ड पोजीशन करना है आपको। डिस्कशन रूम में आप लोग सब लोग होल्ड पोजीशन बोल रहे थे, बाद में किसी ने बोला कि नहीं अपन जा सकते हैं, वीआईपी है, दैट इज द करेक्ट वे। सो ऐसे कॉल्स जो छोटा कॉल है, 20 में से 20 मिल सकता है, टिकट टिकट वैल्यू दैट कॉल। सो भोपाल टावर इंडिया 932, फ्रीक्वेंसी बोलने की जरूरत नहीं है हर कॉल्स में। होल्डिंग शॉर्ट रनवे 32 वॉज करेक्ट। सी ट्रैफिक ऑन बेस लेग, कुणाल आप बोल रहे थे ट्रैफिक वॉज अ गुड यूज ऑफ वर्ड, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं बोलना है।
ट्रैफिक हम तब बोलेंगे जब एक बार ट्रैफिक को डिस्क्राइब कर दिया है किसी ने कहीं पर, उसके बाद वो एयरक्राफ्ट को हम ट्रैफिक 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 करके रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार ग्लाइडर बोलो ताकि इंपॉर्टेंस मिले ग्लाइडर को। ग्लाइडर इज अ नॉन पावर्ड एयरक्राफ्ट। डायरेक्ट ट्रैफिक बोलोगे तो वो कोई भी एयरक्राफ्ट हो सकती है, पावर्ड नॉन पावर्ड, नोबडी इज गोइंग टू इमेजिन ग्लाइडर। सब लोग पैसेंजर एयरक्राफ्ट ही इमेजिन करेंगे फिर। सो सी रोजर अ सर। ग्लाइडर ऑन बेस लेग, एक बार बोलना है, बाद में ग्लाइडर को ट्रैफिक करके बोल सकते हो। सी अ ग्लाइडर ऑन बेस लेग will be able to depart before it lands due VIP on board. Request enter runway 32। डायरेक्ट टेक ऑफ नहीं मांगना है। और ये लाइनअप कहाँ से निकालते हो? मैंने तो लाइनअप किसी कॉल में यूज नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ मत यूज करो, आप लोग गलत जगह पे लाइनअप यूज कर रहे हो। फॉर लाइनअप, फॉर डिपार्चर बोल सकते हो आप, लाइनअप क्यों बोल रहे हो? भोपाल टावर वुड लाइक टू एंटर रनवे 32 फॉर डिपार्चर, VIP on board, holding position. So I like that you were thinking in the right direction. वो बहुत अच्छी चीज थी, बट बोल देना है आपको विल बी एबल टू डिपार्ट बिफोर इट लैंड्स। सी अ ग्लाइडर ऑन बेस लेग, एंड कौन सा बेस लेग? रनवे 32। सी अ ग्लाइडर ऑन बेस लेग रनवे 32 विल बी एबल टू डिपार्ट, टेक ऑफ नहीं बोलना है, बिफोर इट लैंड्स VIP on board, request enter runway 32 for departure. Once you enter runway 32, you will say request takeoff clearance. If they don't directly give you cleared for takeoff. Okay? Rogers. यहाँ पे आपने रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस बोल दिया, गुड जॉब। कुछ नहीं आता तो ऐसा कर सकते हो आप। सो यू आर फॉलोइंग द ट्रेनिंग, आई एम रियली हैप्पी। ओके, एक हिसाब से आप कुछ सही कर रहे हो, बट दीज आर इजी कॉल्स। वो एकदम टफ के लिए कर सकते हो, इजी तो आपको सही से करना चाहिए। बट यहाँ पे आपने ये बोला, आपको बोला आपका इंटेंट क्या है, तब आपको क्लिक हुआ एंड आपने इंटेंट मांग लिया जो करेक्ट डायरेक्शन में था। सो दैट वाज गुड। ओके, रिपोर्ट इंटेंशन, सेम रिप्लाई आपको करना है। वुड लाइक टू एंटर रनवे 32, विल बी एबल टू डिपार्ट बिफोर ग्लाइडर लैंड्स, VIP ऑन बोर्ड, रिक्वेस्ट क्लियरेंस एयर इंडिया 932। ऐसे भी बात कर सकते हो। समझ रहे हैं सब लोग? उज्जवल, आर यू Rogers. लर्निंग? यस सर। कुणाल, आप समझ रहे हैं? रोजर सर। किंगशुक, Yes, sir. based upon your understanding and what I'm adding on top of it. सीख रहे हैं आप लोग कि am I too fast for y'all? No, sir. It's नेगेटिव good सर। pace. Nukul, are you following? Affirm, sir. Okay. तो यहाँ पे लोग ने आपको तरीन दिया है एंड आई थिंक राइट डायरेक्शन में ही तरीन दिया है। आई गिव यू 12 हियर। 12 भी कम ही दे रहे हैं। ओनली इफ यू गिवन अ प्रॉपर रीड बैक, प्रॉपर रिप्लाई एंड ग्लाइडर बोल देते, बेस लेग का रनवे दे देते, तो आराम से 14 मिल जाते इतने मिस्टेक्स करके भी। सो दिस इज गुड, यू नो, मिस्टेक्स होने के बाद भी इफ यू आर एबल टू गेट अ मिनिमम ऑफ 12 13 on a 20 mark question, it shows that you have good quality in your calls. So that's a really nice thing. So far so good, but we need more improvements, but this is right, this is the right thing। बहुत सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अल्फा। ना बेनिफिट ऑफ डाउट मैं दूंगा क्लास में आपको, बिकॉज आपको RCF है कि नहीं क्वेश्चन होने तक नहीं पता था। क्वेश्चन ब्रावो में पता चला RCF है, तो आप कंफ्यूज हो गए आपको क्या करना है। सो विल जस्ट गिव यू नॉट हियर देयर 5 ऑन दिस टू गिव यू बेनिफिट ऑफ डाउट। डिसरिगार्ड किया, पैन पैन बोला। अब आप सोचो, अगर आप पैन पैन बोल रहे हो तो फिर आप ऑल एयरक्राफ्ट बोल दो, और आप अगर नागपुर बोल रहे हो तो फिर पैन पैन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्रांसपॉन्डर फेलियर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर अर्जेंसी सिचुएशन अननेसेसरली। इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ अर्जेंसी व्हेन वी हैव अनेबल RVSM ड्यू इक्विपमेंट विद ट्रांसपॉन्डर। ओके, एंड फ्लाइट लेवल प्लीज एक्यूरेटली चेक करो, फ्लाइट प्लान में क्या दिया है। 110 पता नहीं क्यों मांग रहे हो आप, आपने सोचा कुछ करूंगा, बट ये गड़बड़ था यहाँ पे। सो व्हाट हैपेंड हियर, व्हाट डिड यू थिंक? ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपको? So, in this question, I thought I'm having the transponder failure.
And because of that, I just got a hint that maybe I'm leaning towards an RVSM failure. But again, I didn't clarify in my mind like how to approach this question. Sorry, can you start from start? I could not hear you. Affirm, sir. So since it's saying transponder failure, initially couldn't understand how to approach this question because I was confused with like whether it would be an enable RVSM call or it won't be. So then after that, I just made some wrong decisions while making the flight level requests and all. See, transponder failure should directly hint you. Like कल नुकुल को हम क्या बोल रहे थे कि try to connect a question with what you have learned. Transponder failure is enable RVSM only most of the times with what we have learned. It is that easy. आपको बस ये देखना था कि एटीसी है कि नहीं है. एटीसी नहीं है तो आप इतना तो बोल सकते थे कि enable RVSM due equipment request descend to a non RVSM flight level. तो आपका ज्यादा पॉइंट्स मिल जाते. और अगर आरसीएफ कर रहे हैं तो फिर ऑल एयरक्राफ्ट Air India 932 in the vicinity of Nagpur. Aircraft deviating on own due enable RVSM due equipment, turning right 15 nautical miles at 10 will descend 500 feet and maintain parallel on deviated track. All exit lights on, keep a lookout. बस डिसेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके भी डिसेंड नहीं करना है फॉर वीएफआर एनी विच वेज. तो दोनों में से एक चीज करते हैं ना, आपके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं. इवन दो क्वेश्चन मिसिंग था एक पॉइंट की एक्सपीरियंसिंग आरसीएफ, दोनों के बीच में आप रह गए. दिस इज वेयर आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट जब आप ऐसे पॉइंट पे अटकते हो ना, go with the most appropriate right thing as per your thought. Don't get stuck and do something that you have never done before. That might give you a better result there. डीजीसी एग्जाम्स में जब हम स्टूडेंट्स थे तो हम लोग को इंस्ट्रक्टर्स इनिशियली में एक ही चीज बोलते थे कि हम कंफ्यूज हो रहा है एरोडायनामिक्स, बहुत कंफ्यूज होते थे हम लोग. सो वो बोलते थे कि गो विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. यूज्ड बी लाइक अरे चारों गलत है तो बोले इसमें से लीस्ट गलत कौन सा है वो मार्क करो. चार में से दो सही है तो इसमें से सबसे ज्यादा सही है वो मार्क करो. मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो जब आप कंफ्यूज हो जाते हो दो चीजों में, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 ब्रावो में एटीसी के साथ कांटेक्ट री एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है. ऊपर शायद आरसीएफ रियल टाइम में सिमुलेट भी तो कर सकता है एग्जामिनर. हाँ स्टूडेंट्स, हो सकता है रियल टाइम में कर रहे हो, किसी ने क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाया हो कि एग्जामिनर इज फोर्स टू गिव यू एन आरसीएफ इन रियल टाइम. अगर वैसा है तो आई जस्ट से नागपुर कंट्रोल एयर इंडिया 932 फ्लाइट लेवल 330 55 DME inbound VOR November Papa radial so and so route so and so aircraft enable RVSM due equipment request descent to flight level 270 IFR till Nagpur VFR thereafter till Visakhapatnam Airbus 320 so and so. खत्म. यहाँ पे एग्जामिनर नो रिस्पॉन्स करता, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आप फिर स्टेशन रेस करते नागपुर कंट्रोल इंडिया 932, वो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते, फिर आप समझ जाते ये आरसीएफ था और अब नॉन आरसीएफ आया मेरे को, मतलब री एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट. वो सेम कॉल है, सिमिलर कॉल्स हमने कल किए थे. क्वेश्चन नंबर 3 ब्रावो में फिर वही होगा. at so and so distance at enable RVSM at aviator or on. This is my present position. I would like to rejoin the route. Request rejoining clearance. These are my estimates. And then descent also. यहाँ Yeah, पे अगर आप कैंसलिंग दिस फॉर दैट कर लोगे आगे जाके तो बेस्ट रहेगा. रिक्वेस्ट रिजॉइन द रूट, एस्टिमेटिंग रिजॉइनिंग रूट ओवर नागपुर और थोड़ा आगे सो एंड सो टाइम एंड कैंसलिंग माई IFR टू VFR रीचिंग दैट पॉइंट रिक्वेस्ट डिसेंड टू फ्लाइट लेवल 140. डायरेक्ट वो मांग सकते हो आप. दोनों कंबाइन कर सकते हो या सिंपल नॉन आरवीएसएम वाला कॉल भी ले सकते हो. समझ रहे हैं सब लोग? affirm, sir. पोजीशन ओवरहेड, ओवरहेड मत बोलो, ओवर बोल दो चल जाएगा. नागपुर विस्की, यहाँ थोड़ा डेड एयर था. एट सम टाइम आई हैड ट्रांसपॉन्डर फेलियर. यू जस्ट मेंशन टू गिव अनेबल आरवीएसएम ड्यू इक्विपमेंट, दैट कीवर्ड वो आप दे भी देते ना, आपको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता. सो वे यू अवेयर दिस इज एन आरवीएसएम कॉल और नॉट एन आरवीएसएम कॉल? I was aware, sir. It was an RVSM call. तो सोच के लो ना कॉल, नर्वस मत हो जाओ. Affirm, sir. गलत करने से अच्छा है सही करो, स्लो करो, चल जाएगा एक बार.
सो आपने मेंशन क्यों नहीं किया यहाँ पे अनेबल आरवीएसएन? So I think after attempting question 3 alpha, I think I just got confused and lost my confidence on how to approach question 3 Bravo. नेवर लेट दैट हैपन, एज इन कॉन्फिडेंस गिर रहा है उसको गिरने मत दो, वो नेचुरली होगा, किसी के साथ भी होगा। विल बी लाइक सो व्हाट, एक क्वेश्चन के जगह चक्कर में सारे क्वेश्चंस तो गलत नहीं कर सकते ना, सो आई नीड माई कॉन्फिडेंस बैक। एक तो होगा क्या, दो होंगे खराब, तीन होंगे चल जाएगा, बाकी तो तीन चार है ना मेरे पास बैंक करने के लिए। लेट्स सी हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। यू शुड नॉट जज योरसेल्फ, यू शुड एंजॉय द चैलेंज स्टूडेंट्स। उस हिसाब से ना 5-10 मार्क एक्चुअली बढ़ जाते हैं, वो थोड़ा रिलैक्स माइंड से करते हैं ना हम लोग फिर, तो उसका एक अच्छा इफेक्ट मिलता है हम लोगों को। सो हियर आई से आई थिंक 5 is fine, benefit of doubt, because questions were a little mismatched ऊपर नीचे। एंड क्वेश्चन नंबर 4, एफआईआर रिपोर्ट नहीं बोला। कल कितने बार, 2 दिन से एफआईआर रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं हम लोग, चैन अभी भी कमजोर हो आप उस पे, ऐसा क्यों हो रहा है? एंड W1 W2 किधर है? तो मुंबई रेडियो कॉपी चेन्नई रेडियो W1, W2 कहाँ है? और ये तो मैंने नोटिस भी नहीं किया था, ये तो आई थिंक डिस्कशन रूम ने स्टूडेंट्स में बताया कि अरे कॉल साइन ही नहीं यूज किया। So I missed that. एग्जामिनर इज ऑलवेज ट्राइंग टू हेल्प यू, इसका मतलब ये होता है, समझ रहे हो, कि आपकी एक दो गलतियां ही नहीं देखी एग्जामिनर ने, सो इट मींस दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू। ओवरहेड मत यूज करो, ओवर बोल दो सिर्फ। गुड पॉइंट टू डिस्कस द राइट एफआईआर बाउंड्री, गुड जॉब। इसके आपको 2 पॉइंट्स तो एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, कि वहां पे आपको अवेयरनेस थी कि आप ब्लाइंडली कुछ फॉलो नहीं कर रहे हो। बहुत अच्छा लगा मुझे, दिस इज रियली गुड दैट यू आर एबल टू टॉक टू द एग्जामिनर। वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। बस ऐसे बोलो, एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ऐसा बोल के बोलो आप। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, देयर इज अ मिस्टेक इन द पेपर आई गेस। वो शायद भड़केंगे, बोलेंगे डोंट क्रॉस टॉक सर, सॉरी बट प्लीज चेक, आई थिंक इट शुड बी मुंबई चेन्नई, इफ यू कुड कंफर्म। I don't know if we have got any deviation that have reached Mumbai Delhi FIR, because it's not connected, है ना? तो वो बोलेंगे अरे भाई ये तो पढ़ के आया अच्छा। सो आई रियली लाइक दैट। ओवर, बट पूरा कॉल खराब कर दिया आपने, मतलब खराब नहीं था, बट FIR रिपोर्ट, W2 FIR रिपोर्ट, एयर इंडिया 932 ओवर मुंबई चेन्नई FIR बाउंड्री, रिवाइज्ड ETA वेयर, ETA लास्ट में देना एस्टिमेट्स के, अगर पहले भी दे रहे हो तो कहाँ के लिए, वाइजैक के लिए। रिवाइज ETA वाइजैक 0745, एक्सपीरियंसिंग डिले ऑफ 10 मिनट्स, साफ दिया है ना पेपर में, बोल दो। और एक्सपीरियंसिंग डिले तो है ही नहीं, सो अहेड ऑफ स्केड्यूल बाय 10 मिनट्स, ये बोल सकते हो आप। 20 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ। ओके, Well, sir. तो उनको पहले से बोलने का मतलब है, हो सकता है आपके लिए एयरपोर्ट पे स्पेस चालू रखें, आपके लिए स्लॉट रेडी रखे, नहीं तो 10 मिनट आप जल्दी पहुंचोगे तो आपको होल्डिंग पैटर्न में बिठाया जाएगा, वो वेस्ट ऑफ फ्यूल होगा। तो ये कॉल का मतलब ये है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, मेरे लिए स्पेस है क्या, स्पेस बना के रखी है क्या, नहीं है तो स्पेस बना लो आपके एयरपोर्ट पे। 10 मिनट में काफी फर्क पड़ता है, 5 प्लेन्स का डिपार्चर अराइवल हो सकता है, समझ रहे हो आप लोग? देयर इज अ Sir. रीजन बिहाइंड ऑल दोस रीजंस व्हाई वी आर गिविंग कॉल्स, ऐसे उठा के सिचुएशन नहीं दिया आपको टेस्ट करने के लिए आरटी, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड द सिचुएशन आल्सो। सो एफआईआर बाउंड्री, फिर आप है ना आदत डालो स्टूडेंट्स, रेडियल, डीएमई, फ्लाइट लेवल एंड रूट साथ में बोलने का, फॉर नॉर्मल कॉल्स इन एयर। पहले इन एयर नॉर्मल कॉल्स में ये चीजें बोल दो आप लोग, और इमरजेंसी कॉल्स है उनमें एक आध पोजीशन रेफरेंस दे दो और बाकी सब लास्ट में बोलो। आप मिस ही कर दिए यहाँ पे ये पूरा पूरा। सो मुंबई रेडियो कॉपी चेन्नई रेडियो, एयर इंडिया 932 एफआईआर रिपोर्ट, एयर इंडिया 932 ओवर मुंबई चेन्नई एफआईआर बाउंड्री, फ्लाइट लेवल 120, रेडियल सो एंड सो, डीएमई सो एंड सो, रूट सो एंड सो। एस्टिमेटिंग यहाँ से स्टार्ट होता है, एस्टिमेटिंग कुछ अगर आगे नहीं है तो एक कंट्रोल बाउंड्री बोल दो, कुछ बोल दो, नहीं तो सीधा रिवाइज ETA वाइजैक 0745, अराइविंग 10 मिनट्स अर्ली, एयरबस 320, पैसेंजर ऑन बोर्ड 100, वीआईपी ऑन बोर्ड। ठीक है, आपने ट्राई किया कुछ तो देने का, बट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन थी कंपेयर टू दिस।
लास्ट में बोलना है चेंजिंग ओवर टू चेन्नई रेडियो। Rogers. तो देखो यहाँ पे IFR VFR है तो HF भी है बिकॉज आधा IFR लिया है। द ओनली रीजन वी हैव VFR for Vizag is probably Vizag landing capabilities are not ILS based or instrument based, so they'll be doing visual approach for us. That's why VFR हमें मिला क्योंकि शायद एयरपोर्ट ही हमें IFR नहीं दे रहा था, बस इसीलिए VFR मिला वहां पर। And then changing over. So students have given you 8. I think 10 तो मिलना चाहिए। Okay. Nukul, how was your experience? Never got to share this with you. It was good, sir. I'm able to figure out the questions, and today was good for me regarding to the question paper. Good. Question number 5, 1 was good. Question number 2 is climb to and maintain. Question number 5, 3 is distress phase. And then, if anything, definition. This is how you should be able to answer. And आपको वैसे स्टूडेंट्स 2 मार्क्स दे रहे थे कि आपने कम से कम मेडे तो बोला, बट नो, डिट्रेस फेज हैज अ मीनिंग, इट्स डिस्ट्रेस फेज। क्लाइम टू फ्लाइट लेवल 360 वाज करेक्ट। एंड यहाँ पे टाइम अप हो गया था, बट आई जस्ट वांटेड टू सी इफ यू कैन रिप्लाई। इट वाज इजी लैंडिंग वे। ओके, एनी क्वेश्चंस, डाउट्स? चयन, आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज योर टेक अवे? I learned a lot from all the insights you gave me today, and I hope to implement all these things from the next call. And slowly, I'm just trying to improve my call structures and my rate of speech. And yes, I'm just working on that. ओके, चयन हो गया। किंगशुक? Yes, sir. I also was in Chan's shoes last day, so I could feel what were the mistakes he was making. So I also work on those, to not repeat my mistakes as well as not to do these. Yeah, it was a good experience. I got to know a lot. And um, Tango, November Kilo Charlie also said we can also give a position report if we are close to a phantom point, a point. So yeah, so it's a good experience. Look at the accuracy, students. You are so accurate to what I've been doing. That is nice. थोड़ा आप ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, कल थोड़ा आप ज्यादा जेनरस थे। सो आई थिंक नेक्स्ट टाइम वी डू दिस एक्सरसाइज प्रॉबेबली यू विल बी वेरी एक्यूरेट। हमारी एक्यूरेसी कहाँ वैरी करी है? यहाँ मैंने 2 ज्यादा दिया, आपने कम दिया है। ठीक है, आप सही सोच रहे हो। कम दिए है ज्यादा, ठीक है। 5 से कम तो क्या ही मिलेंगे अगर आधा भी कॉल किया है तो, बट ठीक है, आप लोग सही हो अपनी जगह पे। बट बेनिफिट ऑफ डाउट बिकॉज मेरा मिस्टेक मॉडरेटर का था। टू मच स्ट्रेस गिवन देयर टू द स्टूडेंट। वो बोल सकता है सर मेरे को तो 10 में से 10 चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज देर इज स्टिल अ राइट वे टू गो अबाउट इट। ओके, ये तो मॉड क्लास में है तो एक्सेप्ट कर रहे, एग्जाम में तो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ कोर्स यू गेव 13, 12 इज द सेम। आई थिंक मैंने एडिशन सही नहीं करा है। या किंगशुक का हो गया। कुणाल, So the योर paper was, एक्सपीरियंस। I guess, like Jan was clear with intentions. In question number three, he was having some doubt. Apart from that, it was good. Yeah, he could do better with question number five, I guess, because they are like easy marks. Like it's just like one line answer for you. So if you do it well, like you will get 20 on 20. So like I would just suggest you to work on that. अपना टेक अवे क्या है बताओ? सो आई गेस मैं आरवीएसएम वाले उस क्वेश्चन नंबर थ्री में मेरा भी जैसे मैंने बोला कि पेन पेन नहीं होगा बट यू सेड होगा सो दैट वाज अ मिस्टेक लाइक आई जस्ट वेंट टू द नोट्स एंड या ऑब्वियसली उसमें लिखा हुआ है कि लाइक यू नीड टू हैव लाइक क्या बोलते हैं या मोड सी एंड मोड एस ट्रांसपोर्टर शुड बी वर्किंग सो आई मिस दैट पॉइंट सो या इट वाज अ पॉइंट टू
Think about it. आप लोग बहुत important चीज मिस कर रहे हो. It's a big no-no, students. Big no-no. Like Kingshuk didn't have the memory, Kunal didn't have the memory. Good thing Ujjwal you have the memory. Very nice. Keep it up. I'm sure Nukul के पास भी वो memory है. But Kingshuk, Kunal, you have missed that memory. And Chen, you didn't apply also. Yes. It should मैंने not एक्चुअली have. सर यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी लेक्चर नंबर 22 में ना. इट वाज लाइक आरसीएफ कॉल. तो ओवर देयर लाइक वी वर टेकिंग लाइक देयर वाज एग्जांपल दैट यू गेव ओवर ओपाका नो एटीसी मेक ब्लाइंड कॉल. सो ओवर देयर मिस्ड इट की आरवीएसएम वाला सिचुएशन ना. यहाँ पे हम लोग ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड वाला कॉल ले रहे थे. सो विद दैट आई जस्ट मेस्ड इट अप. वो कॉल जो आप रीड कर रहे हो उसमें आरवीएसएम का कोई मेंशन ही नहीं है. यस सर आई गॉट इट एक्चुअली. आई तो चेक्ड वो इट अप. पोजीशन रिपोर्ट ट्रांसमिटिंग ब्लाइंड बेस्ड कॉल है वो. सिंपल. एंड यहाँ पे तो ट्रांसपॉन्डर साफ दिया है स्टूडेंट्स. कम ऑन. सर So see, if you were a little fast, maybe finish question number 5, तो आपको 4 मार्क मिल जाते एंड आपके 57 हो जाते. एंड अगर क्या कहते हैं ये दो सिंपल एब्रिविएशंस करेक्ट बोल देते जो आपको आने चाहिए तो आपके 8 मार्क्स और बढ़ जाते. तो 65 तो आपको इतना मिस्टेक्स करने के बाद और 2 क्वेश्चंस डिफिकल्ट होने के बाद भी मिल रहा है. अगर बस आप क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से कर लेते तो बस. बाकी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. रिक्वेस्ट स्टार्टअप में आपके 3 पॉइंट्स कटे हैं. वो अगर नहीं कटते बेसिकली अगर आप रिप्लाई सही दे देते ठीक है एंड इन्फॉर्मेशन चार्ली का ध्यान रखते थोड़ा तो आपको बस 10 मार्क मिल जाते. एंड 3 मार्क यहाँ मिल जाते आपको आराम से मिल जाते. क्वेश्चन नंबर 1 अगेन रिप्लाई नहीं सही दिया और कंप्लायंस स्किप कर दिया. कम से कम भी आपको 2 पॉइंट्स तो और एक्स्ट्रा मिले जाते हैं यहाँ पर. सो 3 + 2 5 एक्स्ट्रा यहाँ पे. बस वही है. बेस लेग फॉर विच रनवे सी ग्लाइडर विल बी एबल टू टेक ऑफ बिफोर इट लैंड्स. सही था. बस एक्यूरेटली बोल पाते ना तो आपको +3 आराम से मिल जाते. लाइक और कुछ गलत होता ही नहीं. मत +5 भी मिल जाते आपको. सो मे बी विल टेक +8 एंड +10 बोथ टिल हियर. एंड देन अनेबल आरवीएस हम एक बार बोल देते तो आपको +2 मार्क्स तो अपने आप मिल जाते. अगर आरसीएफ नहीं भी होता तो लिखा हुआ सेम मिस्टेक के साथ बोल रहा हूँ तो +12 अगेन सेम अनेबल आरवीएस हम बोल देते. मिनिमम बता रहा हूँ आपको +14 हो जाता. क्वेश्चन नंबर 4 ये तो मतलब इट वाज लाइक सर्विंग फूड ऑन अ प्लेट वाली बात थी ये. इतना इजी था ये. इजीली आप अगर थोड़ा भी स्ट्रक्चर सही करते एफआई रिपोर्ट बोल देते कॉल साइन बोल जाते मिनिमम और एस्टिमेट्स दे देते तो आपको +6 मिल जाता. तो +20 हो गया आपका स्कोर. प्रोवाइडेड क्वेश्चन नंबर 5 पूरा किया है आपने एंड +20. लुक एट दिस स्टूडेंट्स. लुक व्हाट योर मिस्टेक्स आर डूइंग टू योर कॉल्स. मिस्टेक्स दैट could have been rectified. Basic mistakes बोल रहा हूँ मैं. So this is your potential where I can see so far and I so want to see you perform in class to give me this number. Okay? आप लोग समझ रहे हो स्टूडेंट्स कहाँ 2-2 मार्क 2-2 मार्क 2-2 मार्क बन के मेरे 20 मार्क्स हो रहे हैं. Yes, sir. And this is how we learn. So you have this strong potential to reach here if you fine tune your replies and be aware of situations and of reports and of compliances and abbreviations. 4-5 takeaways हैं, which is simple. You have worked really well on your rate of speech, really good improvement, good. कल को कोई बोलता है ना सर मैं नहीं कर पाऊंगा मैं बोलूंगा चैन से सीखो किंगशुक से सीखो. वो लोग कर रहे हैं. पहली बारी नहीं दूसरी बारी नहीं तीसरी बारी नहीं बट इवेंचुअली हो रहा है. तो दिस इज गुड. दिस इज स्टिल क्विक. 2 बार 3 बार बोलने से नहीं हो रहा है. चौथी बार हो रहा है. इट्स अ बिग बिग थिंग. ये तो जनरली लोगों को लगता है 1-2 बार बोला नहीं हो रहा तो हमसे नहीं होगा. गुड जॉब स्टूडेंट्स. स्टैंड बाय. या एनी फाइनल क्वेश्चंस. Negative, sir. Negative, sir. Negative, sir. ओके
कुणाल, कब दे रहे हो तुम टेस्ट? Sir, I will text you within an hour. ओके। नकुल, तुम कब दे रहे हो? Next week. उज्जवल, आपकी क्या इच्छा है? I can give part one tomorrow also. Actually, the last time I gave mock was around 4 months back before starting of the new semester. So I'm actually happy that I'm able to recall what the structure or what the points are there because I actually had no revision before joining this class. I have just gone back after the semester. So I can revise today and I can give a mock tomorrow also. Not for part one, part two. No, आपको for not for ऑलमोस्ट part two, रेडी part one. करके ही बैठे थे अपन, बिकॉज वी न्यू यू आर गोइंग टू बी बिजी विद स्टडीज, सो दैट इज अ वेरी Yeah. गुड थिंग. वी जस्ट नीडेड सम फाइनल टच अप पॉइंट्स, सो विल रिज्यूम फ्रॉम दैट ओनली एंड विल Okay. सी. सो मैं क्या सोच रहा हूँ, कुणाल, नकुल एंड उज्जवल, आप तीनों कल लाइनअप हो जाओ. ठीक है, डिले मत करो, फिर वीकेंड आ रहा है एंड क्योंकि एग्जाम्स इसी मंथ में होने वाली है, दिसंबर में. सो ये वीक से पहले पहले अगर हम आपका भी प्रैक्टिस कर ले, सो यूल गेट गुड टाइम टू डी स्ट्रेस एंड रीप्लान योर स्टडी स्ट्रैटेजी ओवर द वीकेंड एंड स्टार्ट फ्रेश फ्रॉम मंडे एज अ बफर. तो मुश्किल होगा 3 मॉक करना अगर इतना लंबा टाइम ले रहे हैं. सो वी विल फास्टन द डिस्कशन प्रोसेस बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज गॉटन यूज टू इट ऑल्सो, है ना. एक्सपेक्टेशन भी सेट हो गई हैं एंड एक ही बार 10 बार बोल के कोई फायदा नहीं है. सो आई नो यू विल पिक इट अप, सो मे बी वी कैन डू दैट टुमारो, यू नो. So ideally, we will keep the same time for start. Um, I wanted to start at 11, but I think everybody's comfortable with 12 and 1. So we can do it like 1 to 5. We can plan for tomorrow. Okay, students? We plan for 1 to 4 and keep that study slot in your mind and keep your time available to join a live session. बाकी मैं देख लूंगा जब सेशन स्टार्ट होगा. Is that okay with everyone? Sounds Affirm, good Roger, sir. enough? totally Doable? level. Affirm, sir. Sir. Roger, sir. Roger, sir. Okay? Okay, Ujjwal, doable? Affirm, sir. या पहले किसका होगा, दूसरा किसका होगा, तीसरा किसका होगा, क्लास में बता देंगे. एंड ठीक है, ऑल द बेस्ट. एंड क्या कहते हैं ये, चयन एंड किंगशुक, फाइनल कब दे रहे हो मुझे, पार्ट 1? So, So I have my exam on 9th of December. Can I give it maybe around like 3rd or 4th of December, maybe? नो, 29, 30. थिंक अबाउट मंडे. टेल मी हाउ डज मंडे साउंड. I'll let you know, sir. लेट यू नो. ओके. किंगशुक, so I can do it on Monday. मंडे 2 दिसंबर, Yeah, so I can do it. है ना. हाँ, ठीक है. ओके, एक्सपेक्ट पार्ट 2 क्वेश्चंस ऑल्सो, बोथ ऑफ योर. oh, Roger, okay. sir. ठीक है. डोंट स्ट्रेस आउट, गिव मैक्सिमम टाइम but not like donkey. Give intelligent time and enjoy the process and stay happy. Okay? Follow these instructions. Whenever you're worried or stressed, discuss with me. Follow this belief, you'll feel good, and when you feel good, you do good things. Basically, reduce the mistakes. That's why we say when we're anxious, when we are nervous, we make mistakes. So this is an indirect way of controlling your demeanor or whatever they say. Okay, students? So tomorrow, 1 to 5, we're planning a session. 1 to 4, but keep an hour extra in hand. And Monday, I think Kingshuk and Chayan, you prepare super well for your ultimate not Viva, part 1 in-class exam and make the most of it. And I'll surprise you with part 2 Viva anytime, okay? And Roger, रही sir. बात बाकी तीनों की, Kunal, Nukul, and Ujjwal, so we'll do your calls tomorrow. In-class exam, okay? All the best. Good job. And I'll see you tomorrow, students. Be super So positive. just one thing. So can I join tomorrow? Everybody who has an exam is invited to join. Okay. It will be good. अच्छा है, कर लेना ज्वाइन, इसलिए सेफ स्लॉट है बीच में. सुबह का टाइम भी सेल्फ स्टडी मिलेगा, शाम का भी मिलेगा, है Yes, ना. yes, yes, sir. Roger, एवरीवन sir. एवरीवन इज इनवाइटेड. यस. Roger, sir.
चले फिर, any more questions? Negative, sir. Negative, sir. Chayan, overall, good job. Negative. You're on the right track, just like Ikshuk was. Okay, keep it up. Good job on discussions. Work on your missing areas and wrong areas and correct them. Keep reading abbreviations booklet every now and then when you're free. Okay, and work on your personal feedback. Thank you, sir, for all the inputs. All the best, students. Take care. I'll see you tomorrow. Thank you, Have a sir. nice day, Have a sir. good day. Thank you, Good day, sir. everyone. sir. Nice Good day. day, Ujjwal. Take care, everyone.